Assalamu alaikum. Welcome to today's online session conducted by Gas School. I hope you already know about Gas School, but if not, please feel free to explore our YouTube channel. The topic under discussion today is difficulties in getting married in the Muslim community. I'm sure all of us would have heard about somebody or someone's experience when they decide to get married or when they decide their kids to get married. So we will be discussing about the difficulties that they face when they decide to get married or they decide their kids to get married, and then we will be proposing some solutions. We are joined by some parents, some youth, and we have a religious expert today. So, the agenda of the discussion today will be introductions, then we will be discussing the expectations, and then we will be discussing some issues and difficulties. Then we will be proposing solutions and compromises. So, let's welcome all of you, our guests today. Please give me a brief introduction of each of you, starting from Ms. Huma. माँ हूँ, एक टीचर हूँ, एक मोटिवेशनल स्पीकर हूँ। तो और बीइंग अ मदर, क्योंकि आज का जो आपका टॉपिक है वो शादी पे है, तो मैं बता दूँ आई एम अ मदर इन लॉ एज वेल। एक मेरा दामाद है, अल्लाह का शुक्र है, और अभी आगे 2 और आने हैं, दामाद और एक बहू। तो आप मुझसे जो चाहें सवाल कर सकती हैं। बीइंग इन ऑस्ट्रेलिया फॉर द लास्ट 30 years, so I can tell you कि it is very different and very challenging to what a mother or a parent would expect back home. All right. Thank you so much, Huma. Zishan, would you like to give us your introduction, please? So my name is Zishan, and I recently graduated from university. I'm 21, so I feel like I can bring a youth perspective to the discussion that we're going to be having today. All right. Thank you. Anam, can you please give your introduction too? A'udhu billahi minash shaitanir rajeem. Bismillahir Rahmanir Rahim. Most of the viewers know me. I'm an Islamic scholar, educationist, philanthropist, and a motivational speaker. And especially for the youth work, I have some expertise as well as experience, and I have been working with the youth, with mothers, with parents. So today's topic is kind of a hot topic when we have youth in our home and we want them to get married. So we have to face some difficulties, and with this program, we are focusing on providing some solutions. All right. Thank you, everyone, for joining us today. Let's start off with the first part of the show. Let's discuss about the expectations that parents have and the youth have when they decide to get married, when they decide that their kids should get married. Let's talk about this. Homa, could you please tell me what are your expectations when you've decided to get your kids married? Obviously coming from a Muslim background, तो मैं चाहती हूँ कि मसलक एक हो, मुसलमान तो हो, क्योंकि ऐसा ना हो कि वो दादी जो है वो कहें डेविड और मैं कहूँ अली, ये मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो एज अ पेरेंट मैं ये चाहती हूँ कि मुसलमान बच्चे शादी करें, और मेरे लिए फैमिली वैल्यूज़ बहुत मैटर करती हैं, कि उनकी वैल्यूज़ यानी कि जो आने वाली फैमिली है, जो एक्सटेंडेड फैमिली मेम्बर है, क्योंकि शादी आई बिलीव इज़ अ रीयूनियन, इट्स अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन 2 फैमिलीज। तो ये तो नहीं है कि सिर्फ दूल्हा दुल्हन ही उसमें शामिल होते हैं, उसमें पूरी फैमिलीज शामिल होती हैं। तो अगर इस तरह से हो जाए, आप उनको समझ लें, तो एक दूसरे के साथ रिलेट करना, दूसरे की बात समझना थोड़ी आसानी हो जाती है अगर सिमिलर वैल्यूज हों। तो ज़रूरी नहीं है कि एवरी टाइम यू आर दैट लकी, लेकिन इफ़ यू कैन थिंक पॉजिटिव और अपनी सोच को आप थोड़ा ओपन रखें, तो आई थिंक थिंग्स कैन वर्क इन योर फेवर। All right. So that was with you. Ishan, what do you think? What are the expectations that you have when you decide to get married? I believe that when we're really young, we sort of and when we're looking for a spouse as well, we look for certain characteristics or qualities that they might have, such as them being loving and caring, and obviously at the same time religious as well. But I think often we have a very rose-tinted view, a very idealistic view, where we don't really consider any negative, personality traits that they might have. We never really take into consideration the sort of realities or challenges that we have in life.
So it's sort of just, oh, the person that I'm going to be marrying, they're going to have the best, characteristics, and it's all going to be easy. But then when you actually start exploring, and when you actually start progressing in that spouse selection process, per all the challenges and all the tough parts start coming through. So I think we have a very idealistic view when we're starting to look for someone. All right, thank you so much ईशान. खानम, आप इसमें कुछ ऐड करना चाहेंगी कि असल में क्या तवक्कुआत होनी चाहिए जब कोई भी वालिदैन अपने बच्चों की शादी कराना चाहते हैं, या जो बच्चे हैं जो खुद शादी करना चाहते हैं, तो असल में क्या वो होनी चाहिए एक्सपेक्टेशंस? देखिए, पहले का जो ज़माना था, when we talk about the previous generations, so जो डिफरेंट तरह के मुख्तलिफ तरह के लोगों को साथ एक रिश्ते में जोड़ दिया जाता था, even if they have different mental compatibility level or different background है, different interests हैं, so they used to go along. वो किसी ना किसी तरह निभा जाते थे, क्योंकि उनका जो टारगेट होता था वो ये होता था कि हमने इस रिश्ते को चलाना है, वी हैव टू गो टुवर्ड्स द फिनिश लाइन. तो उनका ये टारगेट होता था कि हमने इसे सक्सेसफुल बनाना है, और चाहे उसके लिए हमें कोई भी कॉम्प्रोमाइज करना पड़े. बट नाउ द सिचुएशन हैज चेंज, नाउ द टाइम हैज चेंज, और इस दौर में अब आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आप किसी को भी किसी के साथ जोड़ दें तो वो दोनों मिलके और उसे एंड तक पहुंचा देंगे, व्हाटएवर द केस. सो आज के दौर में सबसे ज्यादा जो जरूरी चीज है और जो एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए, जो यूथ के जहन में तो है मगर पेरेंट्स के जहन में नहीं है अब तक पूरी तरह, और वो है मेंटल कंपैटिबिलिटी. एक तरह के लोग, एक सोच के लोग जिनके इंटरेस्ट मिलते हों, जिनका लाइफस्टाइल मिलता हो, जिनकी प्रेफरेंसेस मिलती हों, प्रायोरिटीज मिलती हों, उनको एक रिश्ते में जोड़ा जाए तो ज्यादा चांसेस हैं उस रिश्ते के सक्सेसफुल होने के. हम ये नहीं कहते कि it's 100% solution और उसमें problems नहीं होंगी, there would be problems, they need to do the compromises, but उसमें friction कम होगी, उसमें मुश्किलात कम होंगी. तो अगर हम इसको सक्सेसफुल बनाना चाहते हैं तो एक तो ये सबसे अहम चीज है कि पेरेंट्स जो हैं वो अपनी एक्सपेक्टेशंस को रियलिस्टिक रखें, रादर देन ये कि चांद सी बहू लेके आए और जो है एक कमाऊ पूत और ऐसा दामाद हो कि जो बस आपकी बेटी के बिल्कुल अंडर रह के जिंदगी गुजारे. या इफ यू आर अ रिलीजियस पर्सन और आपके बच्चे इतने रिलीजियस नहीं हैं और यू आर थिंकिंग कि आप एक रिलीजियस स्पाउस अपने बच्चों के लिए ले आएंगे एंड बाय दिस दे वुड बिकम रिलीजियस, सो इट्स नॉट हैपनिंग. ये नहीं पॉसिबल है. जो काम आप सारी जिंदगी नहीं कर सके, अपने बच्चों को रिलीजियस नहीं बना सके, इट वॉज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी to give them the training, it was your responsibility to give them the environment to become religious. अब वो आप नहीं कर सके, now you are putting your responsibility on the shoulder of a youngster 20 who is in just 20s कि वो ये काम अंजाम दे कि अब वो उसे रिलीजियस बनाए और एक ऐसे इंसान के साथ उसे जोड़ दिया जाए कि वो उसको उसके प्रेफरेंसेस को, प्रायोरिटीज को चेंज करे. सो इट्स नॉट पॉसिबल. ये एक बिल्कुल ही गलत एक्सपेक्टेशन है. सो वी नीड टू न्यूट्रलाइज आवर एक्सपेक्टेशन, वी नीड टू मेक देम रियलिस्टिक. और इसी तरह जो यूथ है उसको भी ये ज़रूरी है कि वो अपनी एक्सपेक्टेशंस को थोड़ा सा ट्यून इन करे, क्योंकि इफ़ वी टॉक अबाउट बॉयज़ और इफ़ वी टॉक अबाउट गर्ल्स, दोनों में व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द वेस्टर्न सोसाइटीज़, तो एक प्रॉब्लम ये है कि उनकी प्रायोरिटीज़ रियलिस्टिक नहीं है. उन्होंने अपने जहन में अपने हिसाब से एक खास माइंडसेट बनाया हुआ है, एक खास आइडियल कह लें. वो मानेंगे नहीं कि हमने कोई आइडियल बनाया हुआ है, मगर उन्होंने बनाया हुआ है. तो वो आइडियल ये है कि लड़कियां ये सोचती हैं कि ऐसा लड़का हो कि जो यहाँ का ही रहने वाला हो और वो हर तरह से कंपैटिबल भी हो, और पाकिस्तान से उसका कोई मतलब, वो जैसे यहाँ पे यूथ जैसे पढ़ने आ रही है तो वो स्टूडेंट वीज़ा पे हैं, ऐसा नहीं हो
kyunki they think that they are just after their passport, they are after their nationality, they just want to gain that nationality, तो उनको एक लालच है. ऐसा नहीं है कि सबको उसमें लालच होता है, तो थोड़ा सा अपने एक्सपेक्टेशंस को रियलिस्टिक करने की जरूरत है. ऐसे ही लड़कों को अपनी एक्सपेक्टेशन रियलिस्टिक करने की जरूरत है कि जो माएँ अगर उनको फीड कर रही हैं कि वो 1980 की एक लड़की लाके 80s की एक लड़की लाके कि जो घर संभालेगी और सारा बोझ वो उठा लेगी, उसके साथ शादी कर देंगे और वो खुश रहेंगे, तो ऐसा नहीं है. यू आर लिविंग इन 2021, so you have to set your expectations according to the age, according to the time, जो यहाँ की requirement है उसके हिसाब से, क्योंकि they have to brought up the children for these societies. So इतने पुराने जमाने की जो एक अप्रोच है वो नहीं इस जमाने में काम कर सकती. तो हर एक को जरूरत है कि वो अपनी एक्सपेक्टेशंस को ट्यून इन करे. If it's about parents, if it's about youth, both need to work on their expectations. All right. Thank you, Khanam. I think all of you have given very relevant point of views as you've experienced. Let's talk about the difficulties that are facing the community. So let's talk about what are the issues that the parents face. उनको किस किस्म की मुश्किलात होती हैं जब वो अपने बच्चों की शादी करने का डिसाइड करते हैं या सोचते हैं, तो किस किस्म के इश्यूज हैं जो पेरेंट्स फेस करते हैं? मैं अपने तौर पे बता सकती हूँ, जो मेरा मैंने एक्सपीरियंस किया है वो ये कि खानम बेहतर समझती हैं और जानती हैं. मुझे ये लगता है कि जैसे व्हेन आई वाज ग्रोइंग अप या मुझसे पहले की जो जनरेशन है, पहले लोग बहुएं अपने लिए लाते थे या दामाद तो थोड़े से हटके हो जाते हैं. मैं अगर अपने बेटे की आप शादी करना चाह रहे हैं तो अपने लिए लाते थे खानदान वाले, मतलब जो सास ससुर हैं, मतलब अपने लिए से क्या मतलब खानदान चलाए, बच्चे पैदा करे, सास ससुर की खिदमत करे, खानदान खाने वाने पकाए, और ये सब एक माशरे की एक एक्सपेक्टेशन थी औरत की. अब आ जाए आप दामाद पे, तो दामाद का ये होता था कमाओ पूत हो, शक्ल सूरत का अच्छा हो और हमें हमारी बेटी की सुने अंडर में रहे, जैसे कि उन्होंने खानम ने बताया. लेकिन ये सब इसके अंदर दूल्हा दुल्हन की कहीं आपको बात नजर नहीं आएगी. हमारा खानदान, हमारे बच्चे, हमारी खिदमत, अब चाहे वो दामाद हो या बहू हो. पहले ये सिचुएशन होती थी और बच्चे शादियां कर लेते थे. अब क्या सिचुएशन है कि जो बच्चे, मुझे फील होता है, माइट बी रॉन्ग, खानम आप बेहतर जानती हैं, आई थिंक दे हैव बिकम अ लिटिल बिट मोर ईगोसेंट्रिक. ये शायद हमारे उनका पीयर प्रेशर कह लें, वेयर द सोसाइटी दे लिव इन, दैट यू इट्स ऑल अबाउट यू, it's all about you, where are you in the picture, where is this in the picture, it's all about you. तो उसमें मैं ये फील कर रही हूँ कि अगर पेरेंट्स रैशनल डिसीजंस भी लेने की कोशिश करें बच्चों की, नॉट ऑल लेकिन है, तो वो वहां पर भी क्लैश हो रहा है. क्योंकि कहीं ना कहीं जो डायनामिक्स है, जो सोसाइटी आपको जिस तरह से मोल्ड करती है, वो बहुत पार्ट प्ले करती है आपकी आइडेंटिटी में, आपकी शख्सियत में. तो जो बच्चे यहाँ पल बढ़ रहे हैं, वो मैंने देखा है कि उनके माइंडसेट अपने पेरेंट्स से ही क्लैश कर रहे हैं, थोड़ी बहुत ज़्यादा नहीं तो थोड़े बहुत. तो फिर वो ऐसे माशरे से, क्या पाकिस्तान से, इंडिया से या और कहीं से जाके बेटी ले आए, लड़की ले आए या लड़का ले आए, तो माइंडसेट नहीं मिल पा रहे. जैसे कि अंबर ने बताया, खानम अंबर ने, कि माइंडसेट इज वेरी इंपॉर्टेंट. बच्चों का अगर माइंडसेट मिलेगा तो खुशहाल घराना होगा, वरना अब वो बात नहीं है. पहले की शादियां, मुझे लगता है कॉम्प्रोमाइज की शादियां ज्यादा थी. तो आई फील कि पेरेंट्स को ये मसले बहुत हो रहे हैं कि दे हैव टू काम देमसेल्फ डाउन, दे हैव टू टोन डाउन देयर एक्सपेक्टेशंस इन ऑर्डर टू मीट द एक्सपेक्टेशंस ऑफ देयर चिल्ड्रन. तो मुझे लग रहा है कि ज़्यादातर बच्चे ज़्यादा हावी हो रहे हैं पेरेंट्स पे. वो ज़माने गए जब पेरेंट्स हावी होते थे, हावी से मतलब दे वर मोर इन्फ्लुएंशियल एंड दे हैड अ बेटर इम्पैक्ट ऑन द चिल्ड्रंस माइंडसेट एंड एवरीथिंग देन द चिल्ड्रन. लेकिन अब उल्टा है, उल्टी गंगा बह रही है आजकल, कि बच्चों के माइंडसेट्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं, देयर व्यूज़ आर वेरी स्ट्रॉन्ग एंड दे आर वेरी वोकल. पहले ये होता था कि लोग वोकल नहीं होते, लेकिन अब बच्चे दे आर वेरी वोकल. तो माँ बाप पहले तो यही सोचते हैं कि हमारा बच्चा क्या क्या कह रहा है हमसे, भाई बड़ा वोकल है, तो यू हैव टू फर्स्ट दे हैव टू ट्यून दैट हिम. और तो शादी की बात तो बहुत बड़ी बात है. मैं रेगुलर बता रही हूँ कि रेगुलर चीज़ों में, आम जिंदगी में
parents are facing challenges, so shadi to it's a big decision. All right, thank you so much. Zishan, what do you think are the issues that youth faces? I think youth perspective से ये question जो है there can be two aspects to it. So I think on the first hand, oftentimes क्या होता है कि अगर कोई youth eager होता है at an early age to get married, oftentimes they don't really find that platform or that support to explore a potential spouse, and especially in that sort of situation क्या होता है कि they might get led down to a wrong track, so to speak, where they might explore some non-halal ways of interacting with the other gender. So I think that's the first aspect. I think दूसरा aspect इसमें ये होता है कि जैसे खानम अमर ने पहले mention किया था कि sometimes parents they set a very high standard for their son-in-law or daughter-in-law, and when you're in your early 20s as a youth, you might just be a recent graduate, or you might not really have the best job, or you might not really be set up for life. And तो फिर in that sense जो standard parents set करते हैं वो बहुत मुश्किल होता है youth के लिए meet करना. And I think एक third aspect would be कि again जैसे पहले mention किया था कि sometimes parents and the youth, our perspectives, they don't really match up. So there might be a lot of clash in terms of what parents are looking for and what the youth is looking for. कभी parents चाहते होंगे हो सकता है कि their son and daughter they get married at a very early age. जबकि the daughter or the son, they want to maybe study or maybe progress their career a bit more. So again, all these different perspectives, her youth got different experience with that, but these are some of the issues I feel that we're facing, especially in Western countries, of course. The first aspect, I think it's very relevant. The fact that जब सही support या guidance नहीं मिलती, तो फिर you might get off the track and explore some non-halal ways of interacting with the other gender. I think that's one of the major issues, especially in a country like Australia. Yeah. Thank you, Zishan. And I think I do agree with you on this, because I personally feel that there's no support. And even if you're out there and seeking a spouse on your own, you then also raise a lot of eyebrows, and people are very conscious of what you might do or what you're into. Let's move on for now we know what kind of problems we're facing. Let's talk about the solutions. I would ask Khanam first to please discuss the difficulties that are facing both youth and parents. डिफ़िकल्टीज़ की तो हमने अभी काफ़ी हद तक बात की है, उसे टच किया है। थोड़ी सी जो और चीज़ें मैं फोकस करना चाहूँगी, जो सबसे मेन प्रॉब्लम है कि हमारे पास स्ट्रक्चर नहीं है. वी हैवंट मेड एनी स्ट्रक्चर्स फॉर दिस मेन थिंग. ये जो मैरिज का इंस्टीट्यूशन है, इट्स एन इंस्टीट्यूशन, हर एक की ज़िंदगी में इम्पॉर्टेंट है. एंड वी आर एम्फसाइजिंग in front of youth that marriage is very important, लेकिन we are not taking any steps as a community कि ये इतना important aspect है, तो उसके हवाले से हमारे community में कुछ काम हो. हमारी community में ये हो रहा है, I am talking about the whole Muslim community, I am not talking about any particular sect. तमाम sects में ये हो रहा है कि हाँ, पाबंदियाँ बहुत लगाई जा रही हैं कि ये हराम है, ये हराम है, ये हराम है, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, ये नामहरम से ना मिलें, उससे बात नहीं करें. और उससे ये हो रहा है कि जो हलाल है उसको आपने इतना मुश्किल बना दिया है, जो प्रेफरेबल है, जो हलाल है, जो खुदा की नज़र में सबसे बेहतरीन है, शादी का इंस्टीट्यूशन इतना बेहतरीन इंस्टीट्यूशन है कि जिसके ज़रिए से इंसान अपना 50% ऑफ ईमान एंड रिलीजन वो सेव कर सकता है, उसको आपने इतना मुश्किल बना दिया है. और हराम वेज इतने आसान हैं कि विदाउट एनीबडी गेटिंग इन्वॉल्व्ड इन इट, विदाउट कम्युनिटी बीइंग नोन अबाउट इट, वो इजीली उसे फॉलो कर सकते हैं. और जो हलाल इंस्टीट्यूशन है उसको इतना मुश्किल बना दिया है कि शादी को ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल की तरफ ले जाया जा रहा है. तो ये सबसे एक इस वक्त अवेकनिंग पॉइंट है पूरी कम्युनिटी के लिए कि एज ए कम्युनिटी हम सिंसियरिटी के साथ ये कोशिश करें कि इसमें जो हर्डल्स हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, उनको सॉल्व किया जाए.
the main hurdle and the main problem is کہ کوئی ایسا میٹنگ پوائنٹ نہیں ہے کہ جہاں پہ شادی کرنے والے لڑکے اور لڑکیوں کی پروفائلز کو میچ کر کے ان کو میٹ اپ کے لیے سہولت پرووائڈ کی جائے. And I'm even though I'm a Islamic scholar and I represent here women scholars over here, so لیکن جو میل اسکالرس ہیں اس وقت اسلامک اسکالرس، میں معذرت کے ساتھ کہوں گی کہ وہ اس میں بالکل فیل ہو چکے ہیں، بالکل فیل ہو چکے ہیں. دے آلویز ٹاک اباؤٹ دا ریسٹرکشنس کہ محرم نامحرم سے نہیں مل سکتا اور دونوں آپس میں ملاقات نہیں کر سکتے، لیکن اور اس کے لیے وہ بہت عجیب و غریب حل بتاتے ہیں کہ دے ٹاک اباؤٹ آئدر دا پرماننٹ کانٹریکٹ نکاح یا رادر ایون ٹیمپرری کانٹریکٹ متا جسٹ ٹو گیٹ دا میٹ اپ. حالانکہ شریعت آپ کو یہ کہتی ہے کہ وین یو آر میٹنگ اسپاؤس کے لیے، آپ اسپاؤس سلیکشن کے لیے کسی سے ملنا چاہ رہے ہیں، لڑکا لڑکی سے ملنا چاہ رہا ہے، لڑکی لڑکے سے ملنا چاہ رہے ہیں، وین دے آر سیریس، وین دے آر سیریسلی لوکنگ فار اے کمٹمنٹ، جسٹ ٹائم پاس نہیں ہے، چیکنگ آؤٹ نہیں ہے، ڈیٹس نہیں ہے، ڈیٹنگ نہیں ہے، تو وہاں پہ تو شریعت بہت زیادہ سہولت فراہم کر رہی ہے. وہاں شریعت یہ کہتی ہے کہ بغیر حجاب کے بھی ایک میٹنگ ہو سکتی ہے اور ٹاپکس پہ بات ہو سکتی ہے جہاں پہ دونوں سیریس ہیں. تو وہاں تو اتنی زیادہ پروویژن فراہم کی جا رہی ہے ریلیجن کی طرف سے. اور ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ویسے تو یونیورسٹی گوئنگ لڑکا لڑکیاں آپس میں کلاس میٹ سے باتیں کرتے ہیں. آپ پولس میں جاتے ہیں تو آپ وہاں کے جو اٹینڈنٹ ہوتا ہے، جو کیشیئر ہوتا ہے، ڈفرنٹ جینڈرز کے ہوتے ہیں، یو ٹاک ٹو دیم، یو ڈونٹ نیڈ متا دیئر ٹو ٹاک ٹو دیم. بٹ ہیئر ویئر دس انسٹیٹیوشن پریزنٹ، جہاں پہ ضرورت ہے، جہاں پہ آپ کو ایک لیوریج دیا جا رہا ہے شریعت کی طرف سے کہ ایون دے کین میٹ اپ وداؤٹ حجاب ان ون میٹنگ، وہاں آپ اتنی زیادہ ریسٹرکشن لگا رہے ہیں کہ آپ نے بالکل ہی بند کر دیا ہے لڑکے اور لڑکیوں کا ملنے کا کوئی سلسلہ، کوئی طریقہ ہی نہیں ہے. تو اب اس میں سلیوشن کی جب ہم بات کرتے ہیں تو سلیوشن ابھی تو جب تک کوئی کمیونٹی لیول پہ کوشش نہیں ہوتی تو پیرنٹس کو اپنے طور پہ کوشش کرنی چاہیے کہ فیملیز آپس میں کوئی میٹ اپس کے لیے ارینجمنٹ کریں. اور اس میں تھوڑا سا یوتھ کو ریئلسٹک ہونے کی ضرورت ہے. یوتھ نے اپنے ذہن میں ایک عجیب و غریب چیزیں بنائی ہوئی ہیں. وہ یہ کسی کو بھی شادی کے عنوان سے اگر دو فیملیز کو ملانا چاہیں تو یوتھ کو ایک دم اعتراض ہو جاتا ہے. They don't want to meet up. انہیں یہ بہت uncool لگتا ہے. But they need to realize کہ if somebody is coming up just for a meet up, it's not that formal. وہ چائے کی ٹرے لانے والا میٹ اپ نہیں ہے کہ وہ چائے پلا رہی ہیں اور چائے لے کے آ رہی ہیں. It's just hang out کرنا، کہ ایک دوسرے سے ملنا. وہاں پہ دونوں فیملیز ان لڑکا لڑکی کو ملوائیں اور اس میں فیملی ممبرز بھی موجود ہوں پہلے اس میں، تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اور ایک میٹنگ میں وہ اکیلے بھی بیٹھ کے ڈرائنگ روم میں، گھر کے ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے بات کر سکتے ہیں. دیر از نو ہارم ان دیٹ. اور اس طرح کے میٹ اپس جو ہیں ابھی فیملی لیول پہ پیرنٹس کو چاہیے کہ وہ کریں تاکہ سملر مائنڈ سیٹ کے لڑکے اور لڑکیوں کی شادیاں ہو سکیں. سب سے پہلے اسٹیپ کی یہ ضرورت ہے. اس کے علاوہ جو ایکسپیکٹیشنس ہیں ان کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے. اس پہ ہم ابھی اور پروگرام میں بات کریں گے انشاءاللہ. Thank you so much, Khanam. I think there is so much lack of awareness both on the youth's part and the parents' part, and as a community, ہمیں خود نہیں پتا کہ کتنے زیادہ ہمارے پاس سہولت موجود ہے ہمارے اپنے ریلیجن میں جس کو ہم استعمال کر سکتے ہیں، لیکن ہم صرف ریسٹرکشنس کی بات کرتے ہیں اور ان سولوشنس کی طرف نہیں آتے ہیں، کیونکہ میرے خیال سے تھوڑا سا انکمفرٹیبل ہوتا ہے پیرنٹس کے لیے بھی اور پوری کمیونٹی کے لیے بھی اس چیز کو ایکسیپٹ کرنا کہ اچھا لڑکا لڑکی مل سکتے ہیں یا بات کر سکتے ہیں. خیر، لیٹس موو آن ٹو سولوشنس. مس آپ سے میں پوچھنا چاہوں گی کہ کیا آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا سولوشن ہے جو ڈفیکلٹیز آپ لوگ فیس کر رہے ہیں اس کا کیا سولوشن ہے اور کس طرح آپ لوگ اپنی اس کو کم کر سکتے ہیں؟ دیکھیے، میں بالکل خانم عنبر کے ساتھ اگری کرتی ہوں کہ دیر شوڈ بی اے کامن پلیٹ فارم ویئر وی کین ایکچولی ہیلپ both the boy and the girl to meet.
ٹھیک ہے. اور دوسرے یہ کہ پیرنٹس، کیونکہ آئی ایم اے پیرنٹ مائی سیلف، اور میں نے کافی پیرنٹس سے بات کری ہے، تو مجھے یہ لگتا ہے کہ پیرنٹس میں ابھی بھی یہ ہے کہ دے وری اباؤٹ کہ اگلا بندہ کیا کہے گا کہ میرے بچے نے کہیں باہر شادی کر لی. ان کی اپنی ایک چیک لسٹ ہے کہ داماد ہو یا بہو ہو وہ اس چیک لسٹ میں فٹ کرتا ہو. تو سب سے بڑی مثال میں آپ کو اپنی دوں گی. تو میرا جو داماد ہے ہی از ٹرکش. تو جب میری بیٹی کی شادی ہوئی اور وی آر پاکستانی، مسلمان بچہ ہے، تو فار می، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ میرے لیے امپورٹنٹ تھا کہ مسلمان ہو، اللہ کو ماننے والا ہو. آگے یہ کہ خوف خدا ہو، پریکٹسنگ ہو، یہ سب چیزیں بات کی، بھائی اللہ کو ماننے والا ہو، مسلمان ہو. تو جب میری بچی اس کی ملاقات اپنے اور پیئرز سے ہوئی ود ان دا کمیونٹی، تو انہوں نے کہا کہ بھائی یو ہیو لیڈ دا فاؤنڈیشن فار فرسٹ انٹر ریشل میرج ود ان دا کمیونٹی. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں مسلمان آتا ہے. It can be Lebanese, it can be Turkish, it can be Indian, or it can be Pakistani, anything. So I'm a very ardent fan of Khanum Ambar, and she made me realize one thing کہ as long as he is from the same religion، چاہے وہ دو ہندو ہوں دو سکھ ہوں، اس سے کوئی میٹر نہیں کرتا. within the اگر آپ کو لگ رہا ہے within that umbrella آپ کو ایسا اسپاؤس اپنے بچے کے لیے مل رہا ہے، گو فار اٹ. یہ چیزیں امپورٹنٹ. تو پیرنٹس کو اپنی ایکسپیکٹیشنس کو تھوڑا کم کرنا چاہیے. اور یہی وجہ ہے، یہ ذیشان جو بیٹا ہے ہمارا، اس کی بات میں نے سنی تو مجھے لگا یس، دیٹ ایلیمنٹ آف ٹرسٹ بٹوین دا پیرنٹس اینڈ دا چلڈرن، اٹ از ایکچولی کلیشنگ، اٹ از مسنگ. جب آپ کسی کو ٹرسٹ کرتے ہیں، چاہے اگر پیرنٹس اپنے بچوں کو ٹرسٹ کرتے ہیں اور ان کو لگتا ہے کہ انہوں نے اپنے بچوں کو صحیح گائیڈنس دی ہے، سکھائی ہے، تو ان کو انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے کہ جو ڈائنامکس ہیں وہ شیپ کرتے ہیں ان کے بچے کو. تو ان کا بچہ اس قابل تو ہو کہ آپ سے ڈسکس کر سکے، بھائی اماں دس از واٹ آئی وانٹ. تو بی ہیپی ٹو سی دیٹ پرسن، میٹ دیٹ پرسن. اس کے بعد آپ اپنے 20 سینٹس دے سکتے ہیں. اینڈ جیسے امبر نے کہا، بچوں کو بھی یہ سوچنا چاہیے، اپنے بار آف ایکسپیکٹیشن کو تھوڑا کم کریں اور سوچیں، ٹرسٹ کا ایلیمنٹ لائیں کہ ہمارے اماں ابا ہیں، ہمارے ماں باپ ہیں، اگر وہ ہمیں کسی سے انٹروڈیوس کرا رہے ہیں، بھائی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول تھوڑی ہے کہ شادی ہو گئی بھائی آپ کی. آپ ملیں، آپ دیکھیں، اگر آپ کا مائنڈ سیٹ مل رہا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں ملتا تو کوئی بات نہیں. تو آئی تھنک انسٹیٹیوشن اپنی جگہ، پلیٹ فارم اپنی جگہ، پیرنٹس اینڈ چلڈرن بوتھ ہیو ٹو کم ٹو ون پلیٹ فارم اینڈ انڈرسٹینڈ کہ یہ جو ماں باپ اور اولاد کا رشتہ ہے، اٹس اے ویری نائس رشتہ جو اللہ نے بنایا ہے، اور سب سے سیلف لیس رشتہ ہوتا ہے، بالکل بھی انکنڈیشنل لو ہونا چاہیے. تو انڈرسٹینڈ کریں کہ ایک دوسرے کے مسئلوں کو سمجھیں. تو آئی تھنک کہ دونوں طرف تھوڑا سا لیک ہے انڈرسٹینڈنگ کا. اب وہ چاہے پیئر پریشر کہہ لیں یا ماں باپ کا اولڈ اسکول ہونا کہہ لیں. اور دوسری چیز، ایک اور چیز میں آپ سے کہوں گی کہ میں نے یہ بچوں میں اور دیکھی ہے، مجھے نہیں معلوم یہ صحیح ہے، آپ لوگ ریزونیٹ کریں گے کہ نہیں. اگر بچے کے فرینڈ، لڑکیوں کے فرینڈز یا لڑکوں کے فرینڈز، دے آر گیٹنگ میرڈ ارلی، تو پیئرز جو ہوتے ہیں نا، ان کا انفلوئنس بہت ہوتا ہے. تو آٹومیٹکلی آپ کا بچہ یا سارے فرینڈس ول ٹرائی ٹو گیٹ میرڈ ارلی، سیٹل ڈاؤن، کہ اس کی ہوگی اس کی ہوگی، دیٹس ورکنگ ویل فار دیم، ہم بھی کر دیں گے. اور کہیں اگر بچے کے جو پیئر گروپ ہے جو بہت زیادہ جس میں گھومتا ہے، وہ تھوڑے سے لیٹ میرجز کی طرف انکلائنڈ ہیں، چاہے وہ کریئر کی وجہ سے ہو، چاہے مینٹل اسٹیبلٹی ہو یا پروفیشن ہو، جو بھی ہو، تو پھر دے آر انکلائنڈ ٹوورڈز دیٹ. یہ میں نے آبزرو کیا ہے ود ان آور کمیونٹی. امبر بہتر مجھ سے سمجھ سکتی ہیں، بٹ لائک شی سیڈ، اگر ہم منگل نہیں کریں گے، بچوں کو ملائیں گے نہیں، تو دے ول گو ایلس ویئر. Absolutely. Absolutely. Thank you so much, Uma. Zishan, what do you think is the solution for the issues that you guys face when you're deciding to get married? I think, especially when it comes to the big issue of youth getting married, I think ہماری جو communities ہوتی ہیں ویسٹ میں, the Islamic communities, I think they've started to realize the dangers of things like, جیسے خانم عمر نے پہلے mention کیا, the dating, for example, right? How dangerous that can be for Muslim youth. So I think very recently they've started implementing programs like organizing seminars for youth and parents. And I think things like seminars or workshops run by Islamic scholars or even just counselors, I think they can be very important, because on the first hand,
on the first level, they give the youth a platform to come and interact with each other and find someone who's compatible with them. کہ ایسا نہ ہو کہ you're coupled up with someone اور پھر بعد میں پتہ چلے کہ there's so many issues in your married life. So on the first hand, you can interact with someone and find your compatibility, sort that out. And I think for parents as well, these workshops and these seminars, they can be very important because I think something very interesting that Ms. Huma mentioned was that her son-in-law, I think, was Turkish. And I think this concept, agar hum log, in some of our desi communities, kisi ko jaake bole ki, I want to get married to someone who's from a different race or from a different cultural background, so they would find this thought very revolting. They can't even comprehend ki, koi someone from a different race is going to get married into our family. So I think parents' ke perspective ko bhi change karne ke liye these workshops can be very important. So I think it works on both levels. Ke on the one hand, youth کو proper guidance مل سکتی ہے اور proper platform مل سکتا ہے interact کرنے کے لیے اور compatibility find کرنے کے لیے, and then the parents, their perspective as well can be changed. And I think Islamic scholars especially have a big role to play with that, کیونکہ اگر counselor کوئی چیز parent کو بولے گا تو they can just take it very lightly and ignore it. But when the same thing comes from an Islamic scholar, the fact that multiculturalism should be encouraged in our relations, so I think that can have a big impact on parents as well. So I think that's very important, these Islamic community center run programs. Right. ادھر میں Thank ایک you. چیز ایڈ کرنا چاہوں گی کہ جیسے ابھی ہما نے بھی بات کی, ذیشان نے بات کی, دو چیزیں ہیں جن کو پیرنٹس ایک طرف مس یوز کرتے ہیں, بہانہ بناتے ہیں, اور ایک طرف یوتھ ہے جو اسے بہانہ بناتی ہے, یوز کرتی ہے. پیرنٹس جو ہیں, جو کلچرل بیک گراؤنڈ سیم رکھنے کے لیے کلچرل چیزوں کو اسلامک لیبل لگا کے پیش کر رہے ہوتے ہیں. So they need to understand that there is a big umbrella, this is the boundary, and this is the boundary of the religion. So they need to be from the same religion. جو اسلام ہے وہ کسی بھی کلچر کو, کسی بیک گراؤنڈ کو سپورٹ نہیں کرتا. کسی اجمی کو عربی پہ, عربی کو اجمی پہ فوقیت نہیں حاصل ہے. They need to be Muslims. This is the boundary. اب اس باؤنڈری کے اندر جو ہے آپ نے you need to work out, you need to find out this process, اور اس کی اپنی ایک خوبصورتی ہے. You need to be broad minded about it. جیسے ابھی کچھ دن پہلے ہی we were just talking about on family dinner, تو we were wondering کہ ہم 4 ہیں فیملی ممبر گھر میں, اور ہم چاروں کی جو پلیس آف برتھ ہے اور فرام ویئر وی بلونگ, ہم نے جہاں بچپن گزارا ہے, میں, میرے ہسبینڈ, میری دونوں بیٹیاں, وہ چاروں کا پلیس آف برتھ اور جو ارلی چائلڈہڈ جہاں گزرا ہے وہ ڈفرینٹ ہے. دونوں چاروں مختلف جگہوں پہ پیدا ہوئے ہیں, اپنا ارلی چائلڈہڈ مختلف جگہوں پہ گزارا ہے, بٹ وی آر ٹوگیدر اینڈ اٹ gives us so much broad mindedness and understanding of different cultures کہ there is no problem in that. تو اس چیز کو پیرنٹس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کلچر کو ریلیجن کا ٹیگ لگانا بند کریں, اور ریلیجن should be the priority. کلچر اینڈ بیک گراؤنڈ اینڈ ایتھنک بیک گراؤنڈس یہ سب میٹر نہیں کرتے اسلام میں. اسلام میں اس کا کوئی کانسیپٹ ہی نہیں ہے. اسلام میں ملکوں کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. ایک مسلمان دنیا کے ایک کونے میں, دوسرا مسلمان دوسرے کونے میں ہے, وہ دونوں بھائی بھائی ہیں. تو یہ سب باتیں صرف لیکچرز میں سننے کے لیے نہیں ہے, یا کتابوں میں اسلامیات کی پڑھنے کے لیے نہیں ہے, یا سر دھلنے کے لیے, واہ واہ کرنے کے لیے نہیں ہے, اپنی پریکٹیکل لائف میں, اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کرنے کے لیے. اور اسی طرح جو یوتھ ہے وہ ریلیجن یا کلچرل بیک گراؤنڈ یا اپنی کمیونٹی سے میں شادی کرنے سے کترانے کے لیے وہ اس طرح کی عجیب و غریب ایک باتیں لے کر آتی ہے کہ ہم نے ملنا ہی نہیں ہے. یعنی میٹنگ کی ساری پاسبلٹیز کو ناکام بنانا. پیرنٹس کسی طرح ملانا چاہ رہے ہیں کہ بھائی مل لیں, کوئی اچھے آپشنس ہیں انہیں دکھا دیں, مگر وہ عجیب و غریب باتیں کریں. تو اس میں بیسیکلی 2 چیزیں ہیں. ایک طرف ان کے ذہن میں کہیں نہ کہیں یہ ہرڈل ہے کہ انہوں نے کمیونٹی میں شادی نہیں کرنی, وہ اسے پسند نہیں کرتے, یا تو یہ ہرڈل ہے, یا یہ ہرڈل ہے ان کے ذہن میں کہ انہوں نے شادی ہی نہیں کرنی. دے آر اگینسٹ گیٹنگ میرڈ. اور یہ پرابلم بہت زیادہ بڑھتا جا رہا ہے یوتھ میں, کمیونٹی میں ہماری, اور اوور آل
पूरी दुनिया में हर रिलीजन में, हर कम्युनिटी में, हर कंट्री में ये यूथ का सबसे हॉट इशू है इस वक्त कि वो कहते हैं कि शादी की ज़रूरत क्या है। तो इस पे भी हम हमारा जो अपकमिंग सेगमेंट है वो इसी के हवाले से है कि व्हाई वी नीड टू गेट मैरिड। और उसमें हम सिर्फ ये बात नहीं करेंगे कि कुरान और हदीस आपके सामने कोट करते रहें कि आपने अब करना है करना है। प्रैक्टिकल लेवल पे शादी की ज़रूरत क्यों है और क्यों हमें इस इंस्टीट्यूशन की ज़रूरत है, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो इंशाल्लाह ऐसे जो भी क्वेश्चंस यूथ के जहन में हैं वो इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में आंसर होंगे। लेकिन अगर आप अभी शादी को इम्पोर्टेंस देते हैं तो आप इस तरह के बहाने बनाना जो है वो बंद करें और उसको फैसिलिटेट करने की कोशिश करें। यू नीड टू गेट द मीटअप्स, यू नीड टू मिंगल अराउंड और सीरियसली कुछ एफर्ट करने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं होगा, हमारे अमाल ऐसे नहीं है कि हमारे सहन में कहीं से तारा उतरेगा और उससे हमें पता चल जाएगा कि हमारा स्पाउस कौन है। हमें उसके लिए थोड़ी सी एफर्ट्स करने की, वर्कआउट करने की ज़रूरत है। Right. Thank you so much, Khanam. That was very enlightening. So whenever we talk about marriage, we always talk about compromises. Whenever there is a word of marriage, there is a word of compromises. What are the compromises? I know आप लोगों ने briefly बता दिए हैं, लेकिन what are the compromises जो आप तैयार हैं, that you're ready to make? What are the compromises जो आप कहते हैं कि हम चलें, हम ये करने के लिए तैयार हैं और ये हम कर देंगे, this is okay with us. So हम आप बताएंगी कि क्या कॉम्प्रोमाइज है जो आप आराम से कर सकती हैं जब आप अपने लिए कोई भी बहू या दामाद ढूंढती हैं? देखिए मेरे लिए तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मैंने आपको बताया कि शुड बी अ मुस्लिम, क्योंकि आई एम अ मुस्लिम। तो मैं समझती हूँ कि हमारे इवेंट्स, हमारे फेस्टिवल्स वगैरह आसानियाँ जो भी है, आसानी होगी हमारी रिलीजियस चीज़ों को मीट करने का। उसके अलावा आई जस्ट वांट अ गॉड फियरिंग पर्सन जो हमारी फैमिली में आए और हमारी फैमिली में आराम से सिमिलेट हो जाए। एंड सिमिलरली मैं अपने बच्चों से भी ये कहती हूँ कि यू नो हर चीज़ आपको ज़िंदगी में नहीं मिलती, तो छोटी मोटी चीज़ें दे आर नॉट अ बिग डील। और कॉम्प्रोमाइज़ नहीं, मुझे ये लगता है कॉम्प्रोमाइज़ गिव्स यू अ नेगेटिव टोन टू इट। अगर आप ये कहें एडजस्टमेंट, तो एडजस्टमेंट जरा पॉजिटिविटी का एलिमेंट उसमें ले आते हैं। मतलब इट्स द सेम थिंग, लेकिन पॉजिटिव लाइट में देखना है। मसलन ये कि अगर आपसे ये काम नहीं हो रहा, ये आपको पसंद नहीं आ रहा, आप दूसरे तरीके से उसको करने की कोशिश करें, हो सकता है इट माइट वर्क। या किसी ने आपको कुछ बताया, आपको पसंद नहीं आ रहा, आप अपनी माँ से पूछ लें, किसी और की गाइडेंस ले लें। मतलब ये है कि आई थिंक व्हेन यू वांट टू डू समथिंग यू विल डू इट। कॉम्प्रोमाइज तो नेगेटिव मुझे थोड़ा सा लगता है कि आपका दिल नहीं चाह रहा और दिल मार के आप कुछ कर रहे हैं। लेकिन कोई भी रिलेशनशिप हो, ये इमाम अली अलैहिस्सलाम का कॉल है कि अंडरस्टैंडिंग इज व्हाट मेक्स रिलेशनशिप। मतलब ये कि कोई भी अगर आपको हर्डल आता है, आप अंडरस्टैंड करें कि ये एक मसला है आपकी फैमिली के लिए, अगर अच्छा है तो यू जस्ट गो विद द फ्लो एंड थोड़ा सा जो एडजस्टमेंट की जरूरत है, यू एडजस्ट योरसेल्फ टू इट rather than saying it's a compromise. So अगर आप एडजस्ट कर लेंगे तो अच्छा। देखें, आप दूसरे मुल्क में जाते हैं, you have to adapt. Yeah, you have to adapt to their culture, their ways of life. Similarly, जब आप शादी शुरू करते हैं और आप किसी के साथ रहते हैं, तो उसका माइंडसेट, जैसे अमूमन लोग कहते हैं भाई मैं 6 महीने तो इससे बात कर लूँ, साल भर तो आई नीड टू टॉक टू दिस गाय और दिस गर्ल टू अंडरस्टैंड हर। आई थिंक दैट इज ऑल अ फैंटेसी जो हमारी वेस्टर्न सोसाइटी प्रोवाइड करती है हमारे बच्चों को। बात यह है कि जब आप किसी के साथ अंडर द सेम रूफ रहते हैं, उसके बाद आपको सही तरीके से पता चलता है कि ये बंदा कैसा है, उसका मिजाज कैसा है, एंड देन यू स्टार्ट एडजस्टिंग टू दैट काइंड ऑफ माइंडसेट। इसका मतलब ये नहीं है कि वो बुरा है, आपके अंदर भी कुछ चीज़ें ऐसी होंगी कि उसको अगले बंदे को एडजस्ट करना होता है उसके हिसाब से। तो आई थिंक यू हैव टू वर्क टुगेदर इन ऑर्डर टू सर्वाइव अ रिलेशनशिप, वो चाहे माँ बाप की हो, बहन भाइयों की हो, उसके दरमियान हो। इट्स ऑलवेज आई बिलीव इट्स अबाउट वर्किंग टुवर्ड्स समथिंग। All right, thank you. Zishan, what do you think are the compromises you're willing to make, or the adjustments, as Homa said? Yeah, that's a very interesting word, actually, adjustments. I personally believe, actually, that a person, it's very easy for a person to connect with a person from a different culture, race. That's fine.
But when it comes to a different religion as well, I personally believe that there might be certain cases where, you know, you're a Muslim and you might connect or fall in love with someone who's from a different religion. And I think from that point of view, I think there's a necessity to set certain boundaries, perhaps. That you set boundaries and you say, well, this is fine, but if it's someone from a different religion, then obviously that might cause some issues, not really from a religious sense, but also from a practical point of view. Later on, when you have kids, for example, what religion are your kids going to follow, you know? So from a practical and religious point of view, I think it's important for you to set certain boundaries in that sense. And I think at the same time, when it comes to parents' expectations, obviously parents, they want the best for their kids. So when they're looking for a spouse for their kids, they might have, you know, certain characteristics in mind. So I think it's important for us as youth to consider their expectations as well. So I think the youth might need to make certain adjustments in that sense. ऐसा नहीं कि, you know, you be so rigid कि नहीं, this is what I want. I'm not gonna take my parents', you know, wishes into consideration. So I think setting certain boundaries and also taking your parents' wishes into consideration is important. All right, thank you. खानम, आप बताएं कि एक्चुअल कॉम्प्रोमाइज या एडजस्टमेंट जो है वो क्या होनी चाहिए और किस पे, क्योंकि इसमें आप रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू भी हमें बता सकते हैं कि कौन से पॉइंट्स हैं जो हमें एक्चुअली कंसिडर करने चाहिए, जो ज़रूरी हैं, और कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो ज़रूरी नहीं हैं. देखिए, एडजस्टमेंट इज़ अ गुड वर्ड, और हम शेयरिंग के बारे में बात करेंगे कि शेयरिंग एक का माइंडसेट होना चाहिए कि एक नया रिलेशनशिप आप बनाने लगे, सो यू नीड टू शेयर योर होल लाइफ विद दैट पर्सन इन अ वेरी पॉजिटिव मैनर. तो इसमें ये कहना कि कॉम्प्रोमाइज़ है या ये एक बर्डन है, जब शुरू से इसी माइंडसेट के साथ आप रिलेशनशिप शुरू करेंगे तो फिर जाहिर है कि मुश्किलात होंगी. तो इसमें एक बड़ा जो फैक्टर है वो एज का भी है. लेट मैरिजेस इतनी कॉमन होती जा रही हैं, इफ इट्स बिकॉज ऑफ द करियर और इफ इट्स बिकॉज ऑफ द नॉर्म और माइंडसेट और द मैच्योरिटी लेवल, के लेट मैरिजेस की वजह से एक मुश्किल हो जाती है एडजस्टमेंट करनी, क्योंकि एज वाइज भी जो बच्चे होते हैं, हमारे लिए तो बच्चे ही हैं, जो यूथ हैं, जो शादी के काबिल हैं, वो ज़रा रिजिड हो जाते हैं अपनी हैबिट्स के हिसाब से, किसी को स्पेस देने के हिसाब से, अपनी लाइफ में किसी को ऐड करने के हिसाब से. तो उनके लिए एडजस्टमेंट मुश्किल हो जाती है. जितना ज़्यादा इंसान उम्र में बढ़ता जाता है, और ये इसमें कोई दो राय नहीं है, उसके लिए एडजस्टमेंट मुश्किल हो जाती है. जैसे जो मिडिल एज के लोग हैं या जो बूढ़े, आपने कुछ लोग देखे होंगे, वो तो ट्रैवलिंग में अपने जो तकिया भी साथ लेके जाते हैं. दे नीड देयर पिलोज एंड दे नीड देयर ब्लैंकेट्स विद देम टू गेट अ गुड स्लीप, बिकॉज दे आर नॉट रेडी टू एडजस्ट इन द न्यू एनवायरनमेंट. वो इतने ज़्यादा रिजिड हो जाते हैं. तो इसी तरह जब लेट मैरिजेस होती हैं तो एडजस्टमेंट्स मुश्किल हो जाती हैं, कॉम्प्रोमाइजेस करना मुश्किल लगने लगता है. एक नया रिलेशनशिप जो है वो बर्डन लगने लगता है. तो उसके बजाय अगर एक सही बिल्कुल टाइम पे, कि जैसे ही जो स्टडीज हैं वो ख़त्म हो रही हैं और करियर स्टार्ट हो रहा है, उस टाइम पे दोनों को मिला दिया जाए साथ, और दोनों साथ मिलके अगर ग्रो करें, rather than just thinking about a finishing line for your career कि मैं ये कमाने लगूंगा या मैं इस स्टेज पे करियर में पहुंच जाऊं तब मैं रिलेशनशिप स्टार्ट करूं, उससे बेहतर है कि आप एक दोनों रिलेशनशिप बनाएं. I'm not talking about starting the family from the very beginning. I'm talking about starting a companionship from the beginning. आप दोनों मिलके companionship का आगाज करें और दोनों साथ मिलके अपनी एक खूबसूरत जिंदगी को आगे बढ़ाएं. जो एक पौधा है उसको नर्चर करके एक दरख्त बनाएं साथ मिलके. जो तो दोनों जब एक साथ ग्रो करते हैं तो वो आपस में एक बहुत खूबसूरत रिलेशनशिप बन जाता है, और उसमें एक दूसरे की हैबिट्स और एक दूसरे की पर्सनैलिटीज के साथ एडजस्ट करना वो बहुत अच्छी तरह से मुमकिन हो पाता है. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि एक बहुत बड़ी उम्र का हो और एक बहुत छोटी उम्र का हो, उसमें भी मुश्किलात हैं. मैं ये बात कर रही हूँ कि दोनों यंग हैं, दोनों नौजवान हैं,
اور دونوں اس ایج میں ہیں کہ جہاں وہ مولڈ ہو سکتے ہیں, وہ ایڈجسٹمنٹس کر سکتے ہیں, وہ ایک دوسرے کی نیڈس کو ساتھ لیتے ہوئے دوسرے اپنے کمپینین کے لیے اسپیس بنا سکتے ہیں اپنی زندگی میں. تو جب اس طرح سے ریلیشن شپ بنایا جائے گا تو پھر ایک خوبصورت ریلیشن شپ بنے گا اور ایک اچھی زندگی آگے بڑھے گی. تو یہ ایک بہت امپورٹنٹ فیکٹر ہے when we are talking about the adjustment or compromises or making up relationship. اور اس کے علاوہ جو adjustments ہیں وہ سب سے زیادہ اس وقت کمیونٹی کو کرنے کی ضرورت ہے کہ ریسٹرکشنز لگانے کے بجائے اور تنقید کرنے کے بجائے آپ ایک ایسا روڈ میپ پرووائڈ کریں, ایسے چینلز پرووائڈ کریں, ایسے طریقے بتائیں, سولوشنز پرووائڈ کریں کہ جس کے ذریعے سے شادیاں ممکن ہوں اور کامیاب شادیاں ممکن ہوں, کامیاب ریلیشن شپس ممکن ہوں. یہ بہت زیادہ ضروری ہے. All right. Thank you so much, Khanam. I think we've already covered all the topics that we were to discuss today. Thank you, everyone, for joining us today, and also to the audience who are listening to us. And I really hope that all of us have learned something from today's session, and we might have offered actual solutions to people who are facing the difficulties. With that, I think we will sign off and hopefully see you in another session. Take care. Allah Hafiz. اللہ حافظ.